Now the visuals on your screens clearly show the dire situation from Swaroop Nagar's Kushak Road in Delhi. Long stretches of the road are submerged under muddy, stagnant water. Overflowing sewers and persistent waterlogging have made the area virtually impassable. Walking has become extremely difficult. Vehicles are struggling to move. Residents say they are being forced to live with these conditions every year. The visuals are painting a grim picture of the monsoon misery, with basic commuting turning into a daily challenge for locals. Javed Hussain is with us on this story. Javed, what is the situation in Kushak Road in Swaroop Nagar? देखिए जो जिस तरीके से दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदला है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ ये बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में और एनसीआर में बारिश होगी और भारी बारिश होगी। ऐसे में कुशक रोड और अगर स्वरूप नगर की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से वाटर लॉगिंग आउटर नॉर्थ का इलाका है स्वरूप नगर और कुशक रोड जो कि नई दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर आमतौर पर जिस तरीके से वाटर लॉगिंग और बारिश की वजह से जिस वजह से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही है लोगों को, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जो नाराजगी है सिस्टम को लेकर है। अगर हम उदय इस वक्त की अगर हम बात करें तो देखिए इस वक्त मैं नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने वाली इस वक्त हम सड़क के पास मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आमतौर पर शाम के वक्त पूरी तरीके से जाम लगता है, लेकिन अभी इस वक्त जो है ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। हालांकि इस वक्त 5:20 का समय हो रहा है और यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल सड़क के पास हूँ और यहाँ पर फिलहाल अभी किसी तरीके का वाटर लॉगिंग या कोई जाम अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये देखना है कि जिस तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही है। हालांकि अभी इस वक्त जो है अगर आप वेदर देखें तो वेदर बिल्कुल पूरी तरीके से बादल छाया हुआ है, लेकिन बारिश इस वक्त रुकी हुई है और रोड बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ पर अभी जाम बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे जो है ये रास्ता जो है जहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ये आपको सेंट्रल दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक का मूवमेंट है ये नई दिल्ली की तरफ ये रास्ता जो जाता है और इसके बाद ये जो रास्ता ये कई डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। इसके आगे साउथ दिल्ली, उसके आगे साउथ ईस्ट और दूसरी तरफ अगर लेफ्ट को रास्ता अगर मैं दिखाऊंगा आपको जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से जो आगे की तरफ रास्ता है वो फिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि यमुना पार की तरफ का रास्ता यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में अभी शाम का वक्त है, बारिश रुकी हुई है और ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक इस वक्त स्मूथ है। लेकिन अब देखना है कि अगर बारिश होती है या मौसम का मिजाज बदलता है या बिगड़ता है, बारिश तेज होती है जिस तरीके से, उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके का असर होगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो है आप ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से स्मूथ है और यहाँ पर बिल्कुल खाली सड़क आप देख रहे हैं और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से सुबह के वक्त बारिश हो रही थी और लोगों को कहीं ना कहीं बने रही आप हमारे संग, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही। Well, visuals are emerging of the roads in Delhi which are entirely waterlogged after rains took place for hours today. Reports confirm knee-deep waters in several areas including East Patel Nagar, Greater Kailash 2, parts of Dwarka, Noida and Gurugram. Commuters are facing hours-long delays. Vehicles are stranded. Normal life has been thrown into disarray. A distressing video from Swaroop Nagar even showed schoolgirls wading through flooded waters, holding onto an electrical transformer for support. Ahead of the monsoon, the Delhi government had identified 169 waterlogging hotspots, 31 along the ring road alone. 9 underpasses including Mintur Bridge, Zakira and Mulchand were flagged as particularly vulnerable. Atul Randan is with us live. Atul, which are the worst hit areas of Delhi as far as waterlogging is concerned today? Well, several areas, in fact, Mulchand, Gita Colony, Sadar Bazaar areas we have heard about those areas, certainly having a lot of water logging out there. And right since yesterday, in fact, not just today, right since yesterday, since the monsoon finally arrived in Delhi, we have seen those kind of, visuals coming in from several locations. And it's not just about the national capital. In fact, right now I'm in Gurugram, and this is the Narsinghpur area in Gurugram. And what you see behind me is the familiar monsoon story that you get to see from Gurugram. Just a few spell of rains, and what you see is that the situation quickly worsens, and right now you can see vehicles crawling through the whole stretch. You can see people forced to walk through these areas, and as soon as vehicles pass through these areas, you can see waves that the water creates sort of puts others to a discomfort and danger, and that this situation is not limited to one location in Gurugram, and in fact, or be the national capital in Delhi. In fact, several areas that we see continues to pose similar picture across seasons, across monsoon, and in Gurugram particularly, because what you think of Gurugram, those large swanky buildings, IT buildings, of all those areas of you think of Gurugram, but the other side of Gurugram that every monsoon shows, and that reality is this,
is, if you see this area, this whole stretch has been submerged into deep water. People are, are forced to walk through this dirty water. A lot of garbage has also, silt has also accumulated in this water, and it also sort of, carries itself through as people and vehicle continue to pass through. And this is a familiar story, as you can see here, people are forced to walk. So that is the situation right now that we are showing from Gurugram. And as I said, this is not the first location in Gurugram. Right since the afternoon, we have been moving to different locations across different sectors in Gurugram. And what we are seeing is a familiar picture across, different locations in Gurugram, where a minor, a few spell of rain has brought Gurugram to a halt in a way, because a lot of the traffic, problems are also being reported across different sectors. And given the fact that IMD has issued orange alert for today, and for coming few days, we can expect similar pictures to come more forward. All right, more breaking news now that we're tracking.